Hey there everyone. In this video we will going to cover few questions of Cauchy's condensation test. So before we start solving the questions, let's see what is the statement of Cauchy's condensation test. So Cauchy's condensation test says that if Fn be a positive for all positive integral values of n and continuously decreasing as n increases. So if a be a positive integer greater than unity, then two infinite series Fn and a to the power n f a to the power n. These two series will converge and diverge together. So the condition is that Fn has to be a positive integral value, positive integer which is continuously decreases as n increases. Okay. So जो स्टेटमेंट कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट का है वो थोड़ा सा आपको फ्रेज करके लिखना पड़ेगा, लेकिन फॉर अ क्विक रिवीजन आप ये भी लिख सकते हो कि लेट ए एन बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्योंकि उतना याद अब आप कैसे रखोगे. सो लेट एन बी अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव real numbers. Then this series an is convergent if and only if this 2 to the power n a to n is convergent. अब खाली इतना याद रखो, यहाँ पर ये क्या है, a हमारा a टू द पावर यहाँ पर मैंने n लिया है, ठीक है, दिस इज इन द ब्रैकेट. सो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ तो आप इसको याद रख सकते हो. ओके, आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस नाउ. जैसे कि ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ली. सो यू गाइस कैन सी हियर, यू कैन सी अ चेंज ऑफ द लिमिट्स. व्हाट मेजर चेंज इज in this case, in this type of question, we see that we take limit from 2 to infinity, not from 1 to infinity. Now it has a valid reason why, because whenever you will put 1 in place of n, your log 1 will become 0 and this will become an indeterminate form. Okay, so I have to take base as n as 2 so that I can solve the question easily. Okay, so here in this case you can even write it as f, that is for function we are taking, so I can write it here, it is as f. So here fn is given as log n upon n. Okay, now you have to find this value. Okay, which value? 2 to the power n f 2 to the power n. You have to find this value. First, your question will be treated as fn. Then second, you have to find 2 to the power n f 2 to the power n. So 2 to the power n, and in place of n you have to write like this. Okay, in place of fn I have written f2 to the power n. So wherever I have n, I have just replaced n by 2 to the power n, and now this will get cancelled and I will left with log 2 to the power n. From the property of log, I can write this as n log 2, and log 2 is a finite quantity, it has some finite quantity. So now n, if I put the limit from 2 to if I put the limit n tends to infinity, okay, I'm getting this is a
this will become infinity, and this shows that this series is divergent. So it is divergent. Which series? This series. You have to write it. We know that, like I am writing it for this question. We know that n from n tends to from n2 to infinity is divergent. Is divergent. Hence, from n2 to infinity, log n upon n is also divergent. Okay, likewise, you have to solve this type of question. Now, let's take another question, that is 1 upon n log n to the power p. So, here fn is equal to, from 2 to infinity, 1 upon n log n p, and a to the power 2 to the power n, f 2 to the power n is equal to 2 to the power n upon 2 to the power n log 2 to the power n whole p. Now this will get cancelled, and I left with 1 upon log 2 to the power n p. Okay, now from the log property, this n to the power p will come in the front, n to the power p log 2. Now this log 2 is a finite quantity, so 1 upon n to the power p. Now this will, if p is greater than 1, then it will be convergent, and if p is less than 1 or equal to 1, then this will be divergent. From which test? From p test. So from p test, it is convergent if and only if p is greater than 1, and divergent if and only if p is less than or equal to 1. Okay, now let's take the another question. मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब ऑलरेडी मैंने 2 करवाए, अभी ये 4. मैं चाहूँगी कि आप पहले पॉज कीजिए इस वीडियो को यहाँ और ख़ुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है. उसके बाद मैं जो सॉल्व कर रही हूँ उससे अपना आंसर मिलाइए. अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 1-2 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 2 आप खुद से कीजिए, ठीक है. सो ये एफ एन है, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ कि ये अगर एफ एन है, सो दिस इज़ एफ एन. सो मेरा 2 to the power n, f 2 to the power n will be 2 to the power n by, in place of this I have to write this, log 2 to the power n to the power 2. This will get cancelled, and I will left with 1 upon n to the power 2 log 2. Now here 1 upon n to the power 2. 2 is greater. Okay, so here p is equal to 2, which is greater than 1. So it is convergent. Okay, second question. 2 to the power n, f 2 to the power n is equal to 2 to the power n upon 2 to the power n log 2 to the power n to the power 1 by 2. I left with 1 upon log 2 to the power n 1 by 2. Here I can see that 1 upon, here it is n to the power 1 by 2 log 2. So n to the power 1 by 2 is less than 1. So it is divergent. Changing the color, divergent. Okay, by p test. Now in this case, 2 to the power n, f 2 to the power n is 2 to the power n upon 2 to the power n log 2 to the power n. Okay, this will get cancelled, and here it is 1 upon log 2 to the power n. It can be written as log n log 2, n log 2
Now 1 by n, if I put infinity here, 1 by infinity is 0, which is less than 1, so it is also divergent. Okay, the sixth number question, that is 2 to the power n f 2 to the power n is 2 to the power n upon 2 to the power n log 2 to the power n whole 3.2. I can write it as 1 upon log 2 n to the power 3 by 2. N to the power 3 by 2, I will bring it in the front side. So 3 by 2 is 1.5. So 3 by 2 is greater than 1. So it is convergent by P test. ओके, सो अगर आपने कर लिया है तो प्लीज़ मैच कर लीजिए कि आपका ये कन्वर्जेंट आएगा, ये डाइवर्जेंट आएगा, ये डाइवर्जेंट आएगा और ये कन्वर्जेंट आएगा. ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझ आए होंगे. एक और क्वेश्चन लेती और फिर इस वीडियो को एंड करूँगी. तो मैं आपको बता दूँ, कॉची कंडेंसेशन के अभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बहुत क्विक एंड ईजी क्वेश्चन है. बोल सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जल्दी बनते हैं. तो ये टाइप 1 क्वेश्चन है. टाइप 2 क्वेश्चंस में हम लेंदी प्रोसेस से हम बनाएंगे कि कैसे आप टेस्ट अप्लाई करोगे और टेस्ट के फेलियर के बाद आपको किस तरह से इस टेस्ट का यूज़ करके आपको क्वेश्चन करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे. तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, ये मैंने पहले दिया है क्या क्वेश्चन? ओ, ये मैंने पहले दे चुका है मैं ये वाले क्वेश्चन. तो इसमें आप n को हटा दीजिए. ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो सबसे पहले 2 to the power n f 2 to the power n. So 1 2 to the power n upon log 2 to the power n whole power p. So this is 2 to the power n upon n to the power p log 2. तो आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है. 2 to the power n upon n to the power p. log 2 को तो हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं. सो इसमें अभी हम आगे क्या स्टेप करें, तो यहाँ पर ये स्टेप रुक के अभी हम लोग डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे. इसी टाइप का मैंने और बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन लेना है, ये इतना बड़ा नहीं है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट ला रही हूँ. नाउ वी अप्लाई डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट. फॉर दिस आई एम ट्रीटिंग दिस एज अ un. So 2 to the power n to the power p. So I want this. Okay, now I want the ratio of these two, u n plus 1 upon un to n plus 1 upon n plus 1 whole p into n p upon 2 to the power n. ओके, इसको और सिंप्लीफाई आप किस तरह से कर सकते हो? 2 to the power n into 2 इंटू एन टू द पावर पी अपॉन एन प्लस, अब यहाँ पर 2 to the power n लिखो, n plus 1 p. ये कैंसिल हो गया, इधर 2 बचेगा एंड दिस विल बिकम n to the power p and I am taking n to the power p common from this side. I will get 1 upon 1 plus n to the power p. This will get cancelled. Okay, if I put the limit n tends to infinity, तो ये वाला तो पूरा कैंसिल हो जा रहा है. यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 to the power p is 1. सो हमें 2 बच रहा है. अभी बहुत लोग जल्दी में 2 को देख के एक्साइटेड होकर कन्वर्जेंट कर देंगे. मेक श्योर आपने रेशियो कैसे लिया है. मैंने un प्लस 1 अपॉन un लिया है. इस केस में 2 आने पर ये डाइवर्जेंट है. अगर मैं un को पहले ऊपर लिखती और फिर un प्लस 1 नीचे लिखती तब ये कन्वर्जेंट होता. तो ये इससे ही आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता दी आपको. सो इन दिस केस आई कैन सी दैट दिस इज डाइवर्जेंट. ओके, successfully we have completed 7 questions. I think this is the best time to stop the video because we have seen the first type of solution, how we can deal with the Cauchy's condensation test and the next part I will going to tell you the lengthier process. Okay, till then stay tuned, take care, and if you like the video please share it to those who really want this type of video. Okay, bye bye.